गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है जीका वायरस। तो अभी आपको पता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो है जीका वायरस का एक केस मिला है। तो प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भेज दी है महाराष्ट्र में, ताकि उस सिचुएशन को मॉनिटर किया जा सके और ये डिसीज़ जो है वो आगे ना फैले, इसके लिए जल्दी से जल्दी जो है वो कार्रवाई की गई है। तो जीका वायरस होता क्या है? जीका वायरस एक मस्कीटो बॉर्न फ्लैवी वायरस है। मतलब इसको जो एडीज़ मस्कीटो होते हैं, एडीज इजिप्शी, जो जो मस्कीटो आपको बहुत फेमस है, आपको पता है, जिससे डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी होता है, वही सेम जो मस्कीटो है वो इस वायरस को जो है वो होल्ड करता है और इसी से ही वो फैलता है। ठीक है, ये वायरस अब सबसे पहले ये युगांडा जो है 1947 में वहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया गया था मंकीज़ के अंदर। उसके बाद 1952 में जो है युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, तो वहाँ पर इसको ह्यूमंस में आइडेंटिफाई किया गया। और जो है ये जनरली मदर से फेटस में, फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से, फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जहाँ पर भी अगर ब्लड का जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है या फ्लूइड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे ये जो है जीका वायरस फैलता है। ठीक है, अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन या मेडिसिन जो है वो नहीं बनाई गई है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है ये आप सिम्टम्स जो है ये देख लेना, इसके अंदर पढ़ लेना। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। जीका वायरस। So a prompt decision has been taken by Union Health Ministry, and they have sent the multidisciplinary team to Maharashtra to monitor the situation of Zika virus, as a case of Zika virus has been reported in Pune district recently. So what is this Zika virus? It's a mosquito-borne flavivirus, and which it was identified in Uganda in 1947 in monkeys, but later on in 1952 it was identified in humans in Uganda and Tanzania. It is a virus which is carried or transmitted by Aedes aegypti mosquito. This is the same mosquito that also transmits dengue, chikungunya and yellow fever also. Okay, so in general, apart from this mosquito, of course, human to human transmission is possible with the exchange of fluids. So in case of mother to fetus, the exchange of fluids of course happens through sexual contact, transfusion of blood and blood products, and organ transplantation. In all of these cases bodily fluids are exchanged. Okay, so that's why through this exchange of bodily fluids, Zika virus can be transmitted. Okay, currently there is no vaccine or medicine for Zika, so generally the entire treatment relies on therapy, antiviral therapy, or relieving symptoms, basically like we do for corona, like we were actually doing for corona until the vaccine was launched by the governments. Okay, so now लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के, उन्होंने जो है पार्लियामेंट में बताया है कि पिछले 7 साल में हमने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की 43,000 जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो अलग अलग स्टेट्स में लॉन्च किए हैं। तो ये प्रोग्राम है क्या? ये पहले मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम होता था एक, उसको ही रीस्ट्रक्चर और रीनेम करके जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम बनाया गया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इंप्लीमेंट करती हैं, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो के साथ वो जो है वो इसकी फंडिंग पैटर्न शेयर करती है, जैसे 60-40, 90-10 कुछ कुछ केसेस में होता है, वैसे ही जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। तो ये डेवलपमेंटल डेफिसिट्स, जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन है और वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी नहीं हुई है, वहाँ पर ये कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने का काम करता है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, ये स्कीम। और इसके अंदर जो बेसिक एमेनिटीज़ होती हैं, जिससे कि सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को सुधारा जा सकता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट चलाया गया है। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई किया है कि कोई जो डिस्ट्रिक्ट वो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन वाला है या नहीं है? तो पहला तो ये देखा गया कि पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर 25% जो टोटल पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को बिलोंग करनी चाहिए। उसके बाद बैकवर्डनेस का भी क्राइटेरिया है। अब वो बैकवर्डनेस का जो क्राइटेरिया है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? जैसे लिटरेसी रेट कैसा है, फीमेल लिटरेसी रेट कैसा है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट कैसा है, कितने लोगों के पास पक्का घर है, फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है या नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे जो है पैरामीटर्स को लेते हुए जो है डिसाइड किया जाता है कि कोई एरिया जो है वो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन वाला एरिया जो है वो बैकवर्ड है या नहीं है। तो अगर वो होता है तो उसको सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे 90 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया और वहाँ पर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब इसके अंदर छोटे छोटे जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे क्लासरूम्स बनाना,
लेबोरेटरीज बनाना, स्कूल बिल्डिंग्स बनाना है, हॉस्टल्स, टॉयलेट्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं बेसिक लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने का काम किया जाता है इसमें, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स, इन तीनों को जो है वो प्रायोरिटी इसमें दी जाती है स्कीम के अंदर, ठीक है। अब जो है प्रोजेक्ट जो है वो कैसे फंड किए जाते हैं आपको पता ही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या होता है, 60-40 तो है वो नॉर्मल स्टेट्स के लिए कि 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट्स देगा जो भी इसमें खर्चा आएगा। फिर नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के लिए 90-10 की ये रेशियो होती है कि 90% सेंटर देता है और 10% वो वाली स्टेट्स जो है वो इसका खर्चा उठाती हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज कंफर्म टू द parliament that in the last 7 years they have launched 43,000 basic infrastructure projects under this Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. So this program was basically earlier known as multi-sectoral developmental program, but later on it was restructured and renamed as Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. Okay, it's a centrally sponsored scheme which was launched to address the developmental deficits in 90 minority concentration areas or districts. And how this backwardness or how these districts are of minority concentration are identified. So there are two criteria. The first is that the concerned district should have at least 25% of the total population belonging to the minority communities, and second is if that district is backward or not, this is identified. So how this backwardness is measured? So there are several criteria such as religion specific criteria, what is the literacy rate, what is the female literacy rate, etc. And what the next thing is the developmental paradigm of that district. So how much people have a pakka ghar in that district, how many of them are having access to safe drinking water and electricity. So based upon that, all these criteria, these districts have been identified, these 90 districts have been identified, and basic infrastructure projects such as classrooms, community health centers, schools, primary health care centers, etc. These projects are implemented, or these projects are built in these districts along with the help of state governments, because this is a centrally sponsored scheme. Okay, so in the centrally sponsored scheme, a ratio of 60-40 is there for normal states, and for northeastern and hilly states the 90-10 ratio is followed. So this means that 90% cost is borne by the central government and 10% is borne by these and northeast or hilly state governments. And this entire program basically focuses on or gives priority to all such projects which are focused on education, health and skill. Okay, so now let us see the next topic, which is Act East policy. तो जो है अभी आपको पता है कि लद्दाख वाला जो रीजन है जो हमारी वहाँ पर चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ उसके लिए ना मिलिट्री टॉक्स चल रही हैं चाइना के साथ, और वो पिछले कुछ टाइम से कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो अभी जो है आज भी हुई है, आज मतलब मैं आपको बता रहा हूँ तो 2 अगस्त को भी ये टॉक्स हुई हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो भी इनकन्क्लूसिव रही हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का यूज़ करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट जो है उसको डिप्लॉय कर रही है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में और वेस्टर्न पैसिफिक में। मतलब हमारा जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जा रहा है 2 महीनों के लिए। अब ऑब्जेक्टिव तो इसका ये है कि ऑपरेशनल प्रेजेंस बढ़ाने का और सॉलिडेरिटी दिखाने का फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को, जो इंडिया और जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ के एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो कि किन किन कंट्रीज़ के साथ जो है ये एक्सरसाइज करने जा रही हैं ये ईस्टर्न फ्लीट हमारी इंडियन नेवी की, तो आपको पता लग जाएगा वो वाली सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ चाइना का कोई ना कोई इशू चल रहा है, ठीक है। जैसे मलेशिया का, फिर वियतनाम का, फिर फिलीपींस का, फिर सिंगापुर का, फिर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये वाले रीजन में इन कंट्रीज़ के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है चाइना का। तो इंडिया एक तरह से गन बोर्ड डिप्लोमेसी जो है वो करना चाह रहा है। गन बोर्ड डिप्लोमेसी का क्या होता है, मतलब कि पहले ऐसा किया जाता था यूरोप के टाइम में, बहुत सालों पहले, कि अगर किसी कंट्री को आपको धमकाना है, आपको नेगोशिएटिंग टेबल पर अपना हाथ मजबूत करना है, तो आप अपनी नेवी का यूज़ करते थे, उसके आसपास चले जाते थे ताकि उसको लगे कि मेरे को कोई खतरा ना हो या कुछ भी, तो वो आपके साथ नेगोशिएशन में थोड़ा सॉफ्ट हो जाता था, ठीक है। तो अब इंडिया जो है
अब नेगोशिएट कर रहा है, लेकिन चाइना जो है वो नेगोशिएट ठीक से नहीं करना चाह रहा है। तो इंडिया ने ये एक तरह से गन बोर्ड डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है कि गन बोर्ड डिप्लोमेसी में इंडिया एंगेज करना की कोशिश कर रहा है कि हम थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक एक तरह से बनाएं और चाइना को जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आए, ठीक है। फिर जो है अब इसके अंदर मल्टीलैटरल जो हमारी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है मालाबार 21, जिसके अंदर इंडिया, यूएसए, जापान और जो है ऑस्ट्रेलिया जो पार्टिसिपेट करते हैं वो भी करी जा रही है। और जो है ये जो हमारी ईस्टर्न नेवल फ्लीट है ये वहां पर भी जाएगी और ये मालाबार 21 एक्सरसाइज के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जो जो कंट्रीज के साथ चाइना के इशू जो आ रहे हैं या फिर हमारी जो क्वाड कंट्रीज हैं, तो अगर आप देखो कि जिनके साथ प्रॉब्लम है और जो हमारी क्वाड कंट्रीज हैं इनके साथ मिलकर अगर इंडिया की नेवी जो है कुछ एक्सरसाइज करना चाह रही है तो चाइना को ये एक मैसेज देने की एक तरह से कोशिश है। अब इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या? तो गवर्नमेंट ने नवंबर 2014 में ये पॉलिसी को निकाला था, ठीक है। एक तरह से ये एक हमारा पहले लुक ईस्ट पॉलिसी होती थी 1990s में, अर्लियर 1990s में। उसके बाद उसको हमने चेंज करा कि एक्ट ईस्ट। अब हमको सिर्फ देखना ही नहीं है, हमको उसकी तरफ एक्ट भी करना है। तो इसको जो है सुषमा स्वराज जी जो थी उस टाइम पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने जो है ये जो है वो पॉलिसी दी थी। और इसके फीचर्स क्या हैं इस पॉलिसी के कि पहले की तरह सिर्फ बोलना नहीं है, अब टेंजिबल एक्शन लेना है कॉन्क्रीट रिजल्ट्स के साथ। डीपन करना है हमको कॉपरेशन यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के साथ। फिर हमको अपनी बोल्डनेस दिखानी है सिक्योरिटी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डोमेन में। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक की तरफ इशारा कर रही है ना, आपको पता है, ठीक है, चाइना की तरफ इशारा हो रहा है। और ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी जो है वो उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा एक नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए हमारा गेटवे है, ठीक है। तो अब जो है now let us see this topic in English. Act East policy. So as you know that we are currently pursuing negotiations with the Chinese side to de-escalate tensions at the border, but the Chinese side is not responding well, and we have been engaged with them through multiple military talks, but the response has been somewhat cold. That's why in a sudden spate of events, the government or the defense ministry has decided that they will be deploying Indian Navy's eastern fleet in the Southeast Asia, South China Sea or the Western Pacific region, or that is basically the Indo-Pacific region. So it is basically giving a signal to China that we can also be offensive if you are of, or if you want to be offensive on the Himalayan borders. Okay, so just see the itinerary of this Eastern Fleet's deployment during the next 2 months. So this Eastern Fleet will be going to and will be going for naval exercises with all those countries with whom China is having some kind of issues or border disputes. Okay, so from Malaysia to Philippines, Vietnam to Singapore, Indonesia to Australia, all these countries are fed up with Chinese belligerence in the South China Sea. And the most important part being the Eastern Fleet will also be participating in the multilateral exercise Malabar 21, which is basically an exercise of quad countries. So all this engagement of Eastern Fleet is a correct or a direct signal to China that we are also capable of doing or playing the same games that you are playing with us in the Himalayan borders. Of course, what the China is doing is in Himalayan border is not an act of war. They are just posturing. They are just showing aggression to secure concessions. And India is now signaling the same through this gunboat diplomacy that yes, we can also do it. Okay, so what is gunboat diplomacy? Generally, what European countries did in the 16th or 17th centuries was when they were negotiating with some other countries, they used to send their navies near that country so that they can build up pressure upon those countries to give favorable concessions to the country who is exercising gunboat diplomacy. Okay, so now what is this Act East policy of India? It was launched in November 2014 and it marks a policy shift of India from Look East to Act East. We had a Look East policy in 1990s, but in 2014 when the new government was sworn in, the first
External Affairs Minister Srimati Sushma Swaraj gave this policy of Act East, and this policy basically focused on concrete action. Earlier we were just focused on look east, now we are talking about Act East. Now we have to act upon it. Okay, from tangible action and concrete results to deepening cooperation with US, Japan, Australia and South Korea, and giving a bold stance on security, defense and strategic domain. This Act East policy is basically a fulcrum to signal to China that we are also involved, or we are also a stakeholder in the South China Sea disputes, and we are not going to get bogged down by your belligerence or aggression in the border areas of our country. Okay, so now let us see the next topic, which is India at UNSC as UNSC प्रेसिडेंट. ओके, तो ये एट नहीं है, एज है, इसको चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो इंडिया जो है वो अब प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ है इस अगस्त मंथ के लिए यूएनएससी में. ठीक है, तो अब कैसे प्रेसिडेंसी डिटर्मिन होती है? जो हमारे 10 आपको पता है 5 तो जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के अंदर, 10 होते हैं जो इलेक्ट होते हैं, नॉन जो मतलब चेंज होते रहते हैं बार बार. ठीक है, तो वो जो 15 मेंबर की बॉडी हो जाती है ना यूएनएससी टोटल, तो उसमें से अल्फ़ाबेटिकली जो है वो हर महीने जो है वो बारी आती है किसी ना किसी कंट्री की यूएनएससी की प्रेसिडेंटशिप को होल्ड करने की. तो इस बार जो है वो इंडिया की बारी आई है अगस्त में. ठीक है, तो इंडिया जो है वो इस बार यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना है आफ्टर 2011 और 12 के जो उनका पीरियड था. ठीक है, तो इससे पिछली बार 2011-12 में इंडिया जो है वो यूएनएससी का मेंबर बना था और उस टाइम पर प्रेसिडेंट बना था. उसके बाद एक तरह से 10 साल के बाद हमारी ये दोबारा से एक तरह से टर्म आ रही है और हम इसके दोबारा से प्रेसिडेंट बन रहे हैं. ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो होता है उसको फायदा क्या होता है, क्या करता है प्रेसिडेंट जो भी मतलब कंट्री बनती है, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी एक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, पॉलिसी डिस्प्यूट्स के बारे में डिसाइड करते हैं. फिर इंटरमीडिएट अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी भी जगह पर पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें इंटरमीडिएटरी का काम भी जो है वो यूएनएससी के जो प्रेसिडेंट होगा वो ही करेंगे. ठीक है, तो 8th टाइम जो है वो इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा यूएनएससी का. इससे पहले कई बार हो चुका है, जैसे लास्ट टाइम 2011-12 में जब इंडिया यूएनएससी का जो है वो मेंबर था, बना था, तब इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट बना था उस टाइम पर भी. ठीक है, तो अब आपको पता है, बेसिक फैक्ट्स आपको बता दूं, आपको पता है कि इंडिया जो है वो भी रिसेंटली इलेक्ट हुआ है. ठीक है, 2 साल के लिए, टर्म के लिए, 2022 तक के लिए. और इसमें कैसे इलेक्ट किया जाता है? 10 नॉन परमानेंट सीट्स में 5 सीट्स होती हैं अफ्रीका और एशिया के रीजन में. उसमें से 5 जो है कंट्रीज चुनी जाती हैं जो हर 2 साल बाद कि वो यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर्स बनेंगी. फिर एक जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट होती है कोई. ठीक है, मतलब वोटिंग होती है और डिसाइड किया जाता है कि कौन सी वो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट होगी जो 2 साल के लिए मेंबर बनेगी. फिर 2 सीट्स जो है वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट्स के लिए रिजर्व हैं, और 2 स्टेट्स वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और बाकी कंट्रीज के लिए जो है वो रिजर्व हैं. ठीक है, तो इंडिया को जो है जून 2019 में ये जो एशिया पैसिफिक वाला जो ग्रुप है जिसमें 5 सीट्स होती हैं, उसमें से जो है सारे मेंबर्स ने इंडिया को जो है वो वोट किया था और कहा था कि ये हमारी तरफ से इस बार के रिप्रेजेंटेटिव हैं. ठीक है, तो इंडिया जो है वो 2022 तक इस टर्म को होल्ड करेगा, और इंडिया ने कहा है कि वो जो इंटरनल गवर्नेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं यूएन सिस्टम में उसको एड्रेस करने की कोशिश करेगा. इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो ध्यान लाने की कोशिश करेगा वर्ल्ड कम्युनिटी का, और इंटरनेशनल लॉ को कैसे और मजबूत बनाया जाए इसके ऊपर भी उनका हमारा जो है वो फोकस रहेगा. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. इंडिया एज यूएनएससी प्रेसिडेंट. सो इंडिया विच इज़ अ member of non-permanent member of UNSC for the term of 2021 to 22. So India will be acting as the UNSC president for this month of August 2021. Okay, so what happens, how this presidency is determined? So this presidency is determined by alphabetical order, and these countries, these 15 member countries, 5 are permanent members and 10 are non-permanent members. Okay, they are elected to this UNSC body. So these 15 members rotate presidency for each month based upon the alphabetical criteria. Okay, so this month India's term has started. So India will be a president of UNSC for this August 2021 period, and this president who this president of UNSC, as president of UNSC, India will coordinate actions of the council. It will decide on all the policy disputes, and in case there is any conflict, India will also have to act as an intermediary between these conflicting groups. So it is not the first time that India has been
India will be a president of UNSC. It has happened 8 times before. Okay, I'm sorry, 7 times before. This will be the eighth time, and the last one was 2011, 2012. So when India was a member, a non-permanent member of this UNSC in 2011-12, India was elected to this presidency of UNSC. Okay, so there are some basic facts how these 10 non-permanent seats are distributed or how they are elected. So for a term of 2 years, these non-permanent members are elected, total 10 in number. So 5 seats are reserved for African and Asian states, 1 for Eastern European states, 2 for Latin American and Caribbean states, and 2 for Western European and other states. So every 2 years, five countries of United Nations are elected to this non-permanent seats of United Nations Security Council. And this time in 2019, India received the support of Asia Pacific Group, and India was endorsed as a sole contender from this region in June 2019. So India will be serving as a non-permanent member till 2022, and for this month of August, India will be serving as the president of UNSC. Okay, so India has confirmed that it will seek to address the challenges of internal governance of the UN system, including the reforms of UNSC, and we will be uh, inviting the we will be focusing our response to of the world community towards international terrorism, and we will be inviting their attention towards the menace of international terrorism. Okay, so India has also said that it is a firm supporter of international law as well as multilateral institutions, and they will be a voice of reason in the UNSC in support of this international law and these multilateral institutions. Okay, so now the next topic is ऑफिस ऑफ CGPDTM. तो CGPDTM क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो है उन्होंने फंक्शनिंग जो है वो इस ऑफिस की देखी है मुंबई में भी रिसेंटली. तो ये ऑफिस जो है वो होता क्या है? ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और ये सुपरवाइज करता है पेटेंट्स एक्ट, डिजाइंस एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट जो है उसकी जो फंक्शनिंग को जो है ये सुपरवाइज करता है. ठीक है, तो पेटेंट ऑफिस जो है उसका हेड ऑफिस तो कोलकाता में है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है उसका ऑफिस जो है वो मुंबई में है, और जीआई रजिस्ट्री का ऑफिस जो है वो चेन्नई में होता है. ठीक है, तो ऑफिस ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये दोनों जो है वो नागपुर में सिचुएटेड हैं. ये दोनों भी जो है वो इसको सबसर्विएंट है, वो इसको ही रिपोर्ट करते हैं. ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Office of the CGPDTM. So Union Minister of Commerce and Industry has reviewed the functioning of this Office of Controller General of Patents, Designs and Trademarks in Mumbai. So this office functions under the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, under the Ministry of Commerce and Industry, and this office supervises the working of Patents Act, Designs Act and the Trademarks Act. Okay, so the patent office is located in Kolkata, trademarks registry is located in Mumbai, and GI registry is located in Chennai. Okay, so offices of the Patent Information System and the National Institute of Intellectual Property Management, they are situated at Nagpur. Of course, this office of CGPTDM supervises the operation of these both offices also. Okay, and in turn, this DPIIT works as the overarching arm of the overarching supervisory body of this office of CGPDTM. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.